उत्कर्ष कलार राज्य उत्कल 1936 मसीह प्रथम भाषाभित्तिक राज्य भाव में निजर परिचय सृष्टि करथिला ओडिशा नारे अतुल्य भारतर आत्मा आम राज्य ओडिशा आउ मंदिर मालिनी सहर भुवनेश्वर हेउची एहार राजधानी भुवनेश्वर देशर प्रथम स्मार्ट सिटीर मान्यता पाइथिला बेले हकीर महाकुंभ आयोजन को सफल रूपायन देइथिबारु पालटिथिला सारा विश्ववासी आकर्षण केन्द्रबिंदु। अनति दूर में पुरी श्रीमंदिर अवस्थिति एवं चतुर्थ मूर्ति उपस्थिति विश्व दरबार सृष्टि करिछि एक अनन्य परिचय। एही क्रम में भुवनेश्वर आयोजित हो जाइछि 6th एनुअल कांग्रेस ऑफ इम्यूनो ऑन्कोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया जनवरी 31 फेब्रुआरी 1 एवं 2 तारिख पर योजनाबद्ध होइथिला एही सम्मिलनी कर्कट रोगर आधुनिक चिकित्सा संपर्क में करा जाइथिला आलोचना एवं निमंत्रित होइथिले स्वतंत्र सुख्याति संपन्न विशेषज्ञ। पैनल डिस्कशन माध्यम होइथिला चिकित्सा पद्धतिर सफल रूपायन सिद्धांत देशर कोण अनुकोण निमंत्रित होइथिले विशेषज्ञ एवं भाग नैथिले अंतर्जातीय ख्यातिसंपन्न अतिथि वक्ता। So I'm a physician scientist. I see patients, I run clinical trials, and I also do fundamental research to understand why some patients respond to certain type of therapies and while some patients are not. And basically my focus is on immunotherapy. And as you know that immune checkpoint therapy has been a paradigm shift in cancer care. Some patients respond to it, and when they respond to it, they have a very long durable response. But the problem is that not everyone is responding to this therapy, and in countries like India, it's difficult to give this drug to everyone because this is very expensive. So there is a big financial toxicity. So what we need to know, if we have biomarkers to know which patient is going to respond and which patient is not going to respond, that really can help us in enrich patient population and give them the drug. शरीर रे उपजिथिबा बहुविध कर्कट रोगर आधुनिक चिकित्सा संपर्क में करा जाइथिला चर्चा एवं स्तन कर्कट संपर्क रे मध्य रखा जाइथिला एक विशेष संदर्भ। I spoke about immunotherapy, which is a new drug in breast cancer. So the point is that in operable breast cancer, you are going to use immunotherapy, and से आमे कहूँ जे ट्रिपल नेगेटिव जो माने ER PR HER2 नेगेटिव अच्छी और जो माने ऑपरेबल ब्रेस्ट कैंसर गोटे रु 2 सेंटीमीटर ऊपर जार ट्यूमर साइज अच्छी या तांकर काखरे नोड पॉजिटिव अच्छी से मानन को कीमोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी स्पेशली पेम्ब्रोलिजुमैब दबा कथा और सेथिरे तांकर बंचिबार संभावना बढ़ी जाए और ठीक होवार संभावना बढ़ी जाए। इवन आमे कहूँ जे जो माने हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर HER2 नेगेटिव अच्छी से आमे PD-L1 करिबा PD-L1 गोटे मार्कर से जदि हाई PD-L1 थिबो ताले भी आमको कीमोथेरेपी सांगरे मोस्ट लाइकली जदि हम इम्यूनोथेरेपी दबा ताले तांकर ठीक होबार चांसेस बढ़ी जाई पारे। तो दिस इज समथिंग वी स्पोक अबाउट एंड इवन मु कहली जे इम्यूनोथेरेपी रो रोल मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर एडवांस ब्रेस्ट कैंसर रे इन ए सिलेक्ट सबसेट ऑफ पेशेंट्स रे भी ट्रिपल नेगेटिव रे भी आमको बहुत फायदा मिले। सो टेक होम शुड बी दैट यू शुड स्पीक टू योर डॉक्टर। ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स रो इम्यूनोथेरेपी रोल एबे धीरे धीरे बढ़िया को जाउची, and I think in the right patient, if given the right drug, patients can survive very very long. फेब्रुआरी 1 तारिख रे आयोजन करा जाइथिला पारंपरिक उद्घाटन उत्सव। प्रथमे मंचासीन होइथिले वरेण्य अतिथि वृंद एवं परे परे चतुर्थ मूर्ति पादपद्म रे प्रदीप प्रज्वलन करी सम्मेलन सफलता कामना करथिले। संघ पक्षरु सांगठनिक अध्यक्षा डाक्टर ज्योति बाजपेयी प्रदान करथिले स्वागत संभाषण एवं अतिथि देव भवन न्याय रे नोबेल लॉरेट डॉक्टर जेम्स पी अलिसन एवं तांको धर्मपत्नी डाक्टर पद्मिनी शर्मा को संघ पक्षरु प्रदान करा जाइथिला संबर्धना। सभापति संभाषण रखिथिले संगठन अध्यक्ष डाक्टर हेमंत मालहोत्रा एवं अन्यतम अतिथि भाव में जोग देइथिले संघर इनकमिंग प्रेसिडेंट डाक्टर राकेश जलानी। डाक्टर जेम्स अलिसन एवं डाक्टर पद्मिनी शर्मा तांको वक्तव्य रे सम्मेलन रे आयोजक तथा आतिथेयता को करिथिले भूयसी प्रशंसा। संगठन आयोजक सदस्यों को मध्य मंच रे करा जाइथिला सम्मानित। सभा शेष में मंचासीन वरेण्य अतिथि तथा कक्ष रे उपस्थित समस्त विशेषज्ञों को सम्मेलन रे सांगठनिक संपादक तथा रूपकार प्रोफेसर डाक्टर घनश्याम विश्वास जणाइथिले धन्यवाद। IOSI सोसाइटी ओरेशन प्रदान करिया पई निमंत्रित होइथिले नोबेल लॉरेट डॉक्टर जेम्स पी अलिसन एवं तांको शुणिबा पई कक्ष रे सृष्टि होइथिला अहेतुक आग्रह। This Immuno-Oncology Society of India is going to initiating studies of how to bring affordable
levels of these modern drugs that are curing cancer to India. So glad to have a chance to participate in the early stages of collaboration with U.S. scientists and help out. It's an amazing opportunity for both sides, I think, and I'm so grateful to have had a chance to participate here with your wonderful scientists and clinicians. ଆଉ गोटे गुरुत्वपूर्ण गवेषणात्मक संदर्भ प्रदान करने सुदूर अमेरिकार निमंत्रित होते डाक्तर जेम्स एलिसन धर्मपत्नी तथा ख्यातिसंपन्न विशेषज्ञ डाक्तर पद्मिनी शर्मा. It's a real pleasure to be here to speak with all of you, and I've had the wonderful opportunity to participate in the Society's meeting, the Immuno-Oncology Society of India's meeting. Thank you to the organizers for really making this happen, and we were very happy to share our information and our data from our clinical trials in the United States showing how immune checkpoint therapy can cure patients with cancer. And I really think that we need to make these treatments available throughout all of India so that the patients in India who have cancer can also have hope to know that there are treatments that can make their cancer go away completely. And I know that the society here is working to do that, and in collaboration with all of the cancer researchers and physicians in India, and also with the collaboration of the US scientists and clinicians, we can make that happen. So I look forward to the collaborations in the future, and I look forward to getting all of the great cancer care that we have in the US and immuno-oncology and other spaces to the patients in India. कर्कट रोगर आधुनिक तथा सफल चिकित्सा गुड़ी को जानिबा एवं जणैबा पई देश तथा देश बाहर मध्य निमंत्रित होइतिले विशेषज्ञ ओ आलोचना करथिले जुगोपयोगी चिकित्सा पद्धति. So I am here at the conference today, and it's been an incredible journey to meet an amazing colleagues and friends that I've met here in India, but also learn about the great resources that you have here, where we can form collaborations and create new therapies together with all of the technologies and knowledge that we have in the two institutions, or two countries rather. What we do in the lab is that we create and we presented the ability to target T cells through myeloid cells, and we've created a first-in-class antibody drug conjugate that we think will be hopefully in the clinic in the next few years, and we're really excited about this, where we heighten the functions of the myeloid cells to allow T cells to attack cancer cells. आम राज्यर प्रथितदशा कर्कट रोग विशेषज्ञ माने मध्य एही आंतर्जातिक कर्कट रोग विशेषज्ञ सम्मेलन में प्रदान करथिले अनेक गवेषणात्मक संदर्भ और साउंटिथिले अनेक शुभकामना और शुभेच्छा. तेबे राज्य बाहरर विशेषज्ञ माने मध्य मंच रे प्रदान करथिले निजर चिकित्सा चातुर्य. The conference has hosted a number of talks, the pertinent subject of immuno-oncology, and I had the privilege of moderating a session on the other side of the story of cellular therapies in oncology. So basically that was looking at what is not so good about cellular therapies, was what was discussed in the moderation. We know that cellular therapies have great impact in terms of bringing about positive outcomes in patients, especially in hematological malignancies who have failed all other lines of therapy. And that has not been translated as much into solid tumors, but we are making some headways as far as that is concerned. But we also have to understand what the problems of cellular therapies are, because it is not always a smooth road to achieve the objectives without having toxicities either. So we have to be cognizant of what the toxicities might be, especially in hematological malignancies, which can actually result in severe morbidity for the patient, and also costs which are exorbitant in these situations. The main thing that we need to consider is to understand early the toxicities that are associated, and that is what was discussed in the moderations. Basically, acute toxicities and long-term toxicities, especially with depression of the bone marrow, infections, and how we can manage these things. But we are getting there in terms of managing the immune, because we are delving into the immunity and manipulating the immune system for better outcomes in these patients. But it is so very diverse, and there are various other mechanisms which we don't know about, which we have to understand, so that it becomes effective in terms of bringing about positive outcomes for these patients, and also decrease the morbidities so that they have better quality of life. And also, more importantly,
decrease the cost of such treatment, which can be quite exorbitant. कम्बिनेशनल थेरापी इन आईओ इरा पर्यायर कर्कट चिकित्सा क्षेत्र में सुदीर्घ अभिज्ञता को पाथेय करी डाक्टर राकेश जलाली प्रदान करथिले एक विशेष वक्तव्य। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं इस इम्यूनो ऑन्कोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया जो भुवनेश्वर में हो रही है उसमें भाग ले रहा हूँ। इम्यूनो ऑन्कोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं अगले नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी बनेंगे और मैं धन्यवाद करता हूँ सारे मेंबर्स को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। इम्यूनोथेरेपी जैसे आप सब समझते हैं जिसको बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, जो सर्जरी, रेडिएशन और कीमो के अलावा, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इंडिया में भुवनेश्वर में उड़ीसा में नोबेल लॉरेट डॉक्टर जिम एलिसन जो एमडी एंडरसन के हैं वो यहाँ पर खुद फिज़िकली पेश आए और हमें उनसे काफ़ी मार्गदर्शन मिला। प्रोटॉन थेरेपी रेडिएशन की सबसे सोफिस्टिकेटेड या सबसे सूक्ष्म किस्म की किरणों में माना जाता है और ये कई कैंसर्स में बहुत काम करता है। अभी ऐसा देखा गया है कि केवल अगर आप प्रोटॉन करें या केवल आप सर्जरी, रेडिएशन या इवन इम्यूनोथेरेपी दें, आप कुछ सक्सेस पाएंगे। जैसे डॉक्टर एलिसन और कई लोगों ने बोला कि अगर आप सारी चीज़ें इकट्ठा करें और आप बड़े सोच समझ के बड़े एक क्लिनिकल ट्रायल्स और बड़े एक्सपेरिमेंट के हिसाब से साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स लोग, सारे लोग मिलजुल के आए और देखें कि कैसे उसको कंबाइन करें, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल थेरेपी, ऐसा देखा गया है कि अगले 10 से 20 सालों में वो बड़ा सबसे अच्छा होगा। हमने ऑलरेडी प्रोटॉन थेरेपी को एक इम्यूनोथेरेपी के रूप में कुछ रिसर्च, कुछ शोध हमने काम किया है और कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स भी हमने छापे हैं पूरे विश्व में। लेकिन अगले 8-10 सालों में, बल्कि पूरे देश में और पूरे विश्व में कुछ हद तक इसको कैसे कंबाइन करें और कैसे उसका फ़ायदा उठाएं, ताकि जो हमारे कैंसर, जो चैलेंजिंग कैंसर साइट्स हैं, जो ऐसे मुश्किल कैंसर्स हैं जिसमें केवल सर्जरी, केवल रेडिएशन, केवल कीमो काम नहीं कर पाएगी, लेकिन चारों चीज़ें काम कर पाएंगी, जिसमें इम्यूनोथेरेपी भी होगी, रेडिएशन भी होगी, और रेडिएशन के माध्यम से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है या तो वो स्टेरोटैक्टिक रेडिएशन बोलते हैं SBRT, या चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन थेरेपी है। तो अगला जो डेकेड होगा बड़ा एक्साइटिंग है और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हमारे कैंसर मरीजों को इसका फ़ायदा होगा। यही 3 दिन व्यापी सम्मेलन एक विशेष आकर्षण थिला IOSI सोसाइटी प्रेसिडेंशियल ओरेशन, जहां की प्रदान करथिले संगठन अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत मालहोत्रा। जो कैंसर का काम करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और जो कैंसर पे रिसर्च करते हैं, इन दोनों लोगों को साथ में लाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉडी होनी चाहिए जो इन दोनों को, जिसको हम लोग बेंच बोलते हैं जहाँ पे लेबोरेटरी में काम होता है, और हम बेड साइड बोलते हैं जहाँ पे पेशेंट का बेड साइड जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। तो बेंच और बेड साइड को साथ लाना बहुत ज़रूरी है, तभी अपने देश में हाई लेवल साइंस की प्रोग्रेस होएगी। तो हमने ये इम्यूनो ऑन्कोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया वहाँ पे स्थापित करी थी और मैं उस बॉडी का IOC का फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट था। फिर 2 साल पहले आई टुक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ IOC। अभी यहाँ भुवनेश्वर में हमारी 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट ये तो है ही कि खूब सारे कैंसर के एक्सपर्ट्स जो कैंसर को ट्रीट करते हैं वो यहाँ पे हैं, अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। और एक नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर जेम्स एलिसन MD एंडरसन कैंसर सेंटर USA से, वो हमारे स्टार गेस्ट हैं और स्टार स्पीकर हैं। एक ओरेशन दिया था इम्यूनोथेरेपी के बारे में, तो मैंने मेरे टॉक में ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया है कि जो ये महंगे मॉलिक्यूल्स हैं जो आम तौर पर हमारे पेशेंट्स के लिए मतलब एप्लीकेबल नहीं है, उनके फाइनेंशियल रीच में नहीं है, उनको कैसे सब पेशेंट्स को जिनको इन दवाइयों की ज़रूरत है, ये दवाइयाँ उनको कैसे दी जाएं। तो 2 मुद्दे मैंने मेरे सुनने वालों के सामने रखे थे। पहली चीज़ तो मेक इन इंडिया, ये जो एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं ये हमको शोध करके, रिसर्च करके अपने देश में ही बनानी है, जिससे कम खर्चे में ये दवाई बन पाए और हमारे पेशेंट्स को प्राप्त हो पाए।
और दूसरी चीज़ जो हम अभी जिस तरीके से हम अभी ये दवाइयाँ पेशेंट्स को देते हैं उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है क्या? दवाई की मात्रा अगर कम करें तो उसका कोई जो उसका प्रभाव होता है वो कम तो नहीं होगा। हमारे देश से ही कुछ ऐसी रिसर्च है कि अगर लो डोज इम्यूनोथेरेपी दी जाए तो वो भी उतनी कारगर होती है जितनी फुल डोज इम्यूनोथेरेपी होती है। और लो डोज इम्यूनोथेरेपी में अपन कम खर्चे में ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। भुवनेश्वर आयोजित ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ସଂଘକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସାଧୁବାଦ। So this is the 6th Immuno-Oncology conference that has been organized here in Bhubaneswar, and we had a great we were fortunate enough to have the Nobel laureate James Allison himself come and address here in this conference. So basically for long we have been concentrating only on the cancer cell, and we were treating them with the cancers with cytotoxic therapies. But now over the last few years now, along with the surgery, the radiation therapy and chemotherapy, now we have the fourth pillar of in our armamentarium of treating cancer, and that's immunotherapies. What has happened now is we have gone away from just concentrating on the cancer cell, and along with the cancer cell it is important to treat the tumor microenvironment and also to modulate the body's immunity. And with the help of the immunotherapies that we have now, we are more and more targeting the cancer cells, not directly like with the cytotoxic therapies, but with the immunotherapies, so that we can kill the cancer cell irrespective of what the target is, irrespective of what basically the genetic defect is that in that cell. And I think that is going to help us improve the outcomes of patients with cancer in the near future. All is not that simple. It is not that we have learned how to use the immunotherapies, but we are slowly learning that. We will have to learn in the future how to use them, when to use them, how to combine these therapies with the other therapies that we have already. And if once we know that, I think that's going to be a great time in the future in the basically the treatment of cancer, and it is definitely going to help more and more patients and help us cure more and more patients, especially the patients with metastatic disease, patients who have disease spread all over the body, and I think that's going to improve the outcomes. But I've been coming to Odisha for a very long period of time, last 30 years. I love coming to Odisha. This meeting, Immuno-Oncology, it's very important, and I'm happy that I have come here to learn a lot of things, participate in the meeting. Medical science is changing, especially in the field of oncology. We are no more doing only surgery, radiation therapy or chemotherapy. This field has gone far beyond that. We are bringing in new drugs, trying to understand the disease so that we can help the people, those who are suffering from the difficult disease, what we call cancer. It has been a wonderful meeting, and best wishes to people of Odisha. दीर्घ 6 वर्ष है यह संगठन निरंतर भाव में विशेषज्ञ मान अपडेट करने दिगरे जारी रखी यार उद्यम, जहाद्वारा हाथ पाहांतरे मिल पार सफल चिकित्सा। So we are having privilege and pleasure to have Professor Jim Allison, who is the Nobel laureate for Physiology and Medicine in 2018, and his pioneer work actually started the 5th modality of care in cancer, which is immunotherapy. Along with him, there is Dr. Padmini Sharma, who is another giant in immuno-oncology field and doing multiple trials which are helping to pave a path for cancer care. Along with that, there is Dr. Betty Kim and Dr. Sangeeta Goswami also, who are all from MD Anderson, and they are part of Cancer Moonshot program, which is making a progress in cancer care and with a mission to decrease the morbidity and mortality in cancer. We are trying from Immuno-Oncology Society of India to have collaborative links between India and USA and MD Anderson, so that we can help our patients to in immuno-oncology, in other parts of cancer care, and to improve their prognosis. भुवनेश्वर सम्मिलित होते देश तथा विश्वर सुनामधन्य कर्कट रोग विशेषज्ञ एवं तार सफल रूपकार होउछन्ति प्रोफेसर डाक्टर घनश्याम विश्वास। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସଫଳ କରାଇବାରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପରିଶ୍ରମ ତଥା ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ଜଣାଇଥିଲେ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 3 दिन ହେଲା
6th Immuno Oncology Society रो एनुअल कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर रे करलु। सो 3 दिन रे आमे मोटामोटी 350 लोकल जो मैंने नेशनल फैकल्टीज आउ मोटामोटी 6 जन आम इंटरनेशनल फैकल्टी थिले। सो इम्यूनोथेरापी गोटे कैंसर गोटे आर्मामेंटेरियम जोटा आमको ट्रीटमेंट माध्यम रे दूच। सो यही मुहूर्त रे प्रिवेंटिव नु आमे क्यूरेटिव हिसाब रे हो कि पैलिएटिव हिसाब रे यूज कर। सो आगामी दिन में आम देखा कि इम्यूनोथेरापी रो ट्रीटमेंट कैंसर ट्रीटमेंट रे केते उपयोगी हो पारुची। आमे कोविड टाइम रे भी देखीचु जे बॉडी रो इम्यून सिस्टम केमती काम करे। जहाँकर इम्यूनिटी कम थाए से मानकर कोविड बेसी आक्रांत होतला, से मानकर डेथ बेसी होतला। जहाँकर इम्यूनिटी भलो थिला से माने कोविड को हराई देथिले। सेमती कैंसर रे आमे केमोथेरेपी कथा होतलु, टार्गेटेड थेरेपी, बायोलॉजिकल थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी। सो इम्यूनोथेरेपी गोटे इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट। ए ट्रीटमेंट रो जो आविष्कार करथिले लैब रे 2018 रे नोबेल लॉरेट जेम्स पी एलिसन से आम गहन आसते फ्रॉम यूएसए एमडी एंडरसन ह्यूस्टन रू। तांका संगे थिले डॉक्टर पद्मिनी शर्मा, डॉक्टर संगीता गोस्वामी, डॉक्टर बेटी किम्स। सो ये 3 दिन रे आमे बहुत चर्चा कराला। आमे ऐसे डेवलपिंग कंट्री रे आमे केमती बहुत लोकों को पाखरे ए ट्रीटमेंट पहुँचे पारिबा। आगामी दिन रे आमे देखिबा जे ए ट्रीटमेंट केते गवर्नमेंट बा जेनेरिक कंपनी आसला परे आमे बहुत मात्रा रे पेशेंट को आमे ट्रीटमेंट दे पारिबा। बहुत गुड़ा कैंसर आमे जोटरे भाबुतलु जे ट्रीटमेंट हो पारिबोनी बा लाइफ दे पारिबानी बा क्योर हो पारिबोनी। बट आमे देखुचु जेतेले इम्यूनोथेरेपी आसिला एगुड़ा धीरे धीरे मिथ्या हवा को लागलानी। सो हे पारे आमे किछि कैंसर को आमे मात दे पारिबा। किछि कैंसर जोटा ट्रीटमेंट हो पार नथले सेगुड़ा रे आमे धीरे धीरे गोटे जितबार सिचुएशन आसी। आम सब धन्यवाद देवु सब जो माने नेशनल फैकल्टीज, लोकल फैकल्टीज, इंटरनेशनल फैकल्टी जो माने आम सहर रे आसिकी टेम्पल सिटी जगन्नाथ जगार आसिकी से माने आम भितर रहिले। से माने आमर आयोजन संगे भी बहुत खुशी थिले। जहाँ साइंस डिस्कशन है से भी बहुत खुशी थिले। सबुठ इम्पोर्टेंट थिला आमर हॉस्पिटैलिटी रे से माने बहुत खुशी है कि से माने निजे निजे जगह को फेरिबे। सो आगामी वर्ष आम पुणी सेम एनुअल कॉन्फ्रेंस आउ गोटे राज्य रे हबो आउ गोटे जगह रे हबो। बट आमको यही मौका मिलता यही कॉन्फ्रेंस को होस्ट करिया पई भुवनेश्वर रे 31 जनवरी 1 एंड 2 फेब्रुआरी 2025। ओडिशा रे आयोजित ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଟି କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ କରିବ ଏବଂ ତାହା ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ।